Hi, welcome back to Travelocon. My name is Zoha, and in this video we are going to talk about hashtags and basically a lot of things about hashtags for better engagement on your Instagram channel. So let's get started. The first point is actually which we consider it. So the first point is number of hashtags to be used. I know Instagram allows us to use 30 hashtags, but did you know that using all the 30 hashtags and bombarding your pictures with tags, hashtags and everything is actually going to ruin the game? Yes, well, I said that. So the thing that you have to do is you have to use a proper amount, or shall I say proper number of hashtags. Let's say 15 to 20. Instagram algorithm keeps changing, and according to the last algorithm you need to use only a few hashtags for better engagement, so keep that in mind. Well, Instagram का algorithm जो है वो time के साथ साथ change होता रहता है, तो आपको भी अपनी जो आपकी strategies हैं, hashtags हैं, वो time to time change करने पड़ते हैं. Point number 2 is to use proper hashtags. Now I know it sounds similar but it is different. Just keep following. हम लोग जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं टैग्स यूज करना, या इफ वी डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, व्हाट डू वी डू इज वी टेंड टू यूज ऑल द फेमस एंड मोस्टली यूज टैग्स इन अ पिक्चर्स, विच इज एक्चुअली रॉन्ग इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर. What will happen is your picture is going to get lost in the process. मतलब वो इतना ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, इतने ज़्यादा उसके पोस्ट आते हैं कि eventually your pictures will show on the feeds of people following it, but it will get lost like down the lane. So what you can do here is use the hashtags who have like 50k following a post to 500k, मतलब इसके बीच में. एंड उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी. एक बार आपको टाइम निकाल के ये टैग्स का रिसर्च करना पड़ेगा, एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months. अनदर मिस्टेक दैट मोस्टली बिगिनर्स और पीपल हु डोंट नो अबाउट टैग्स मेक इज दे यूज एनी रैंडम टैग्स इन द पिक्चर. जैसे कि जस्ट इन केस उनको जो लगता है कि टैग जो रिलेवेंट है या वायरल हो रहा है कुछ उससे रिलेटेड, तो दे यूज दैट एंड इवेंचुअली उनका पोस्ट कहीं नहीं पहुंचता है. यूज ओनली रेलेवेंट हैशटैग्स. ट्रस्ट मी, अगर आप एक पिक्चर पे सिर्फ 5 टैग लगा रहे हो और वो टैग्स आर विद इन द रेंज एंड आर रेलेवेंट टू द पिक्चर, दैट कैन हेल्प यू वे बेटर दैन यूजिंग 30 टैग्स विथ नो कनेक्शन एट ऑल. सो जस्ट focus on the number of tags that you are using and relevance डालो. जैसे कि just in case I post travel pictures, so I will post only travel related travel related hashtags, or maybe अगर उस picture के अंदर कोई चीज़ है, just in case I am posting a picture with a mug in my hand, so I may also post hashtags related to the mug, or if the sky is very good, or so maybe related to the sky. So post use only the hashtags that are actually relevant to the picture that you are posting, so that अगर वो आपका पोस्ट कहीं शो अप होता है, if anybody is actually searching for sky pictures and आपने sky के रिलेटेड हैशटैग्स यूज़ किए हैं, तो लोगों को अगर आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वो जाए और क्लिक करे. वरना टैग्स में पीपल डोंट जस्ट रैंडमली सेट एंड सी कि अच्छा स्काई के टैग में ओशन का पिक्चर अलाउ देख लेते हैं. ऐसा नहीं होता है. पीपल एक्चुअली गो फॉर टैग्स जब उनको उससे रिलेटेड कुछ देखना होता है. सो जस्ट गो फॉर रेलेवेंट हैशटैग्स. एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी बैक टू कि आपका अगर कंटेंट अच्छा होगा तभी लोग, अगर हैशटैग्स वो देख रहे हैं, उनको सर्च कर रहे हैं, आपकी पोस्ट अच्छी होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, तभी वो लोग उस पर क्लिक करेंगे एंड दे विल सी, एंड दैट्स हाउ दे विल फाइंड यू. So it all comes down to that content is the king and you have to focus on the content. And इससे याद आया कि मेरी अगली वीडियो is going to be on this, how to make content really eye catching and कैसे आप अपने content को अच्छा कर सकते हो to do this overall growth on Instagram. So keep watching, subscribe कर दो इसी बात पे और bell icon दबा देना, because why not. And let's get into our next point. So अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जोहा आपने ये तो बता दिया कि रेलेवेंट यूज करो, कम हैशटैग यूज करो, पर कैसे हैशटैग्स यूज करने हैं. डोंट वरी, आई एम हियर अगेन, एंड इसमें आई विल टेल यू. लेट्स से कि आपको पांच टैग्स चाहिए विद इन 3 कैटेगरीज. नाउ द फर्स्ट कैटेगरी विल बी द नीश. जो भी आपका नीश है, जो आपका एक्चुअली आपका पूरा फीड जिससे रिलेटेड है. जैसे मैं आई पोस्ट कॉन्टेंट रिलेटेड टू ट्रैवल एंड समटाइम्स डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएशन एज वेल. Then next जो 5 hashtags हैं that I will use according to the location of the picture, because मेरे mostly travel pictures होते हैं, so obviously travel pictures is all about like
travel and locations, you know, they are interrelated, so I have to use location tags. Now if अगर आप फूड का पेज है जस्ट इन केस आपका, तो व्हाट यू कैन यूज इज, पहले आपने अपने 5 नीश के टैग्स डाले. नेक्स्ट जो आप 5 है दैट कैन बी अबाउट द फूड, यू नो, मे बी आप पिज्जा खा रहे हो तो पिज्जा के 5 टैग्स हो सकते हैं. यहाँ पे आप कहाँ खा रहे हो उसका टैग हो सकता है. एंड जो लास्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी होती है वो दैट इज लाइक सेंट्रिक टू द पिक्चर. सो उसमें व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू फाइंड आउट सम थिंग्स जो उसमें पॉप कर रहा है आपके पिक्चर में. जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे हाथ में मग है, जस्ट इन केस मग वाली पिक्चर, यू कैन यूज इट अबाउट व्हाट द मे बी सम मग हैशटैग्स और मे बी सम कॉफी हैशटैग्स और मे बी समथिंग अबाउट आप जो उस पिक्चर में कन्वे करो, मे बी द लैंडस्केप इज टू गुड, यू यूज सम लैंडस्केप रिलेटेड हैशटैग्स. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा. डोंट यूज एक ही तरह के बहुत सारे टैग्स. And that were the 3 categories. The first one should be about your niche. The second one should be about the environment your picture is created in. जैसे कि for travel pictures it should be the location. And for the third one it should be very much centered to the picture. The content of the picture, the objects in the picture, the theme that you want to convey in the picture. So that would be it for the types of hashtags. Now this is another point जो कुछ लोग इससे agree करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. So it's totally your call. ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है कि नहीं भाई करो ऐसा कुछ नहीं है. Now there are actually like a few pages on Instagram, और शायद से there are many pages on Instagram जो कि content repost करते हैं बाकी creators का. So what you can do कि उसमें से आपको सर्च करना है कि कौन से बड़े बड़े पेजेस हैं जो कि अच्छा कंटेंट रिपोस्ट करते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सर्च फॉर दीज पेजेस जो कि अपना एक हैशटैग उन्होंने क्रिएट किया होगा एंड दे एक्चुअली रिपोस्ट कंटेंट उस हैशटैग में से. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड 3 to 4 हैशटैग्स जो ऐसे पेजेस का अलग अलग जो रिपोस्ट करते हो अच्छा कंटेंट. एंड यू कैन ऑल्सो टैग दीज लाइक पेजेस, उनको आप अपने पिक्चर में भी टैग कर सकते हो सो दैट दे नो कि अच्छा इसने ये क्रिएट किया है, हैशटैग भी यूज किया है एंड कंटेंट अच्छा है, तो दे कैन रिपोस्ट योर पिक्चर्स. नाउ व्हाट दैट वुड डू इज बाय दैट मीन्स उस पेज पर अगर आपका रिपोस्ट होगा तो जो उनकी ऑडियंस होगी, इफ दे लाइक योर कंटेंट दे विल कम बैक टू योर अकाउंट एंड दे विल वॉच योर अकाउंट. इफ दे लाइक योर कंटेंट लाइक अगेन आपके प्रोफाइल पे, दे वुड डेफिनेटली फॉलो एंड दैट्स हाउ यू कैन रीच मोर पीपल. So I think these are the 5 main factors that you have to focus on अगर आप hashtags की बात करें तो. And keep following this as well as me on Instagram as well. I have like a travel feed on Instagram. So if you like traveling, you can go to my description, click on the link and follow me on Instagram because I post there very frequently. It's not like YouTube. I'll try my best to help you more and more in creating content. Till then, subscribe, like, share, comment, all of that, and I hope I see you again in the next video next Sunday with better content and better content on creating better content, if that makes sense. So that will be it. I'll see you guys again. Bye, take care and subscribe करना मत भूलना.